गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड इवेंचुअल सेफ स्टेट्स। देयर इज अ डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एन नोड एंड ईच node labeled from 0 to n minus 1. Okay, the graph is represented as 0 index 2D array graph and where graph of I is the integer array of nodes adjacent to node I. Okay, meaning there is an edge from a node I to each node in graph of I. Okay, so there are एक सिंपली 2D array है, तो जो भी रो का इंडेक्स होगा वहां से एवरी जो पॉसिबल नंबर है इन दैट रो, तो वहां तक एक एज होगा हमारा ग्राफ का. ओके, a node is a terminal node if there is no outgoing edges. Okay, a node is safe node is every possible path starting from that node leads to the terminal node. Okay, or another safe node. Fine. Written an array containing all the safe nodes of the graph. The answer should be sorted in ascending order. Fine. इसको कंसिडर मत करो, ये आखिर में हो जाएगा. तो पहला एग्जांपल देख लो. यहाँ पे टर्मिनल नोड्स कौन सी होंगी जहाँ पे कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है, दैट इज 5 and 6. ओके, सो ये इवेंचुअली दे आर इन सेफ स्टेट्स. ओके, सो यहाँ से फोर फोर पे देखो. अब फोर से जो एक ही आउटगोइंग एज है दैट इज टू 5, और 5 से कोई नहीं, तो 5 टर्मिनल है एंड 4 इज ऑल्सो ऑल द पॉसिबल पाथ goes to terminal node, so 4 is also in safe state. Now look at 2. 2 से भी जितनी बात बाहर जा रही है, here only 5, और 4 भी 5 से ही था, तो ये भी eventually safe state है. All possible path going from 2 to the safe state, but there is a loop from 1 to 3. If you observe, 1 1 goes to 2, then 2 goes to 3. Okay, then 3 again goes to 0, so that is a loop. तो ये नहीं हो सकता, ठीक है. And similarly goes for this one. और कंस्टेंट्स है ऑलमोस्ट 1e4, तो वो ऑफ एन स्क्वायर तक सोच सकते हैं, बट द नंबर ऑफ एजेस will be range in this, so range of ages are more higher. There are m edges between n nodes, तो complexity will be m into n. तो वो देखना पड़ेगा हमें, तो हमारे ऑब्जर्वेशन देखते हैं पहले. सो वही जो डिस्कस किया, व्हाट इज टर्मिनल नोड एंड व्हाट आर all the possible path goes to terminal node that are the safe. और 5 और 6 की इन डिग्री और आउट डिग्री जो है, इन डिग्री और आउट डिग्री, हाँ दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हियर, कि भाई मेरे करंट नोड से कितने आउटगोइंग एजेस है, कितने इनगोइंग एजेस है, इसके लिए हम इन डिग्री और आउट डिग्री कहते हैं. देर इज स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑफ इन डिग्री एंड आउट डिग्री इन सॉर्टिंग इन ग्राफ्स. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है when we are considering some problems like yesterday's problem is also another in degree or out degree problem if we able to convert it servers, the computer servers problem. And there is a special sorting technique in the graph, I think. uh, I forgot the name of that, but in degree and out degree is used in that sorting technique also. Okay, so there is another concept, adjacency list, if you don't know in the graphs. This is used to represent the graph in an vector, or what you can say that connected vector manner, where we try to store the or possible edges that goes from current edge to the next destination edge. So this is basic representation of graph where we use, and I have represented the first test case in adjacency list, where from for the node 1 we are going to 0 and 3. Sorry, for 0 this I have to figure it out. Okay. So it is like from 0th index, here if you observe from 0th index we can go to position 1 and 2. So I reverse it. uh, I just shown it that from 1 I can go to 0 and I can go to 3. Okay, how 3 वो आप इस वेक्टर से देख सकते हैं, ठीक है. from 2 uh, from 2 there are two incoming edges from 0 and 1. For 1 there are two incoming edges from 0
3. For 5 there is two incoming edges from 2 and 4, and for 3 there is only one incoming edge, that is from 0. I think there is some mistake in the writing. If you guys get that, please consider to comment it down. आगे की ऑब्जर्वेशन देखते हैं. आप अगर जेन्युइनली ध्यान दे रहे हो तो आपको पता चल जाएगा क्या है. So target nodes are the terminal nodes. तो यहाँ पे terminal nodes कौन सी होंगी? 5 and 6, which don't have any outgoing edge. To get them in a queue, simple BFS करेंगे. Traversing back from destination to the source, ऐसा बोलेंगे कि हम terminals कौन से 5 and 6. तो 5 and 6 को हमने यहाँ पे देखेंगे आप, if possible 5 and 6, 5 को अपने adjacency list में रखा है कि जहाँ से हम 5 को reach कर सकते हैं. That are the position 2. ओके, फ्रॉम हियर पोजीशन 2 से हम रीच कर सकते हैं पोजीशन 4 से. तो गिवन ग्राफ में देखो, सेकंड इंडेक्स पे जो अरे दिया है उसमें 5 है, फोर्थ इंडेक्स पे जो अरे है 5 है. तो हमने 5 को लिया वहां से, एंड उनका जो करंट इंडेक्स है ऑफ वेक्टर उसको हमने एडजेसेंसी लिस्ट के बारे में अपेंड किया है एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ 5 में. सो दैट हम ऑन गोइंग आउट डिग्री भी कैलकुलेट करेंगे. जिन जिन वेक्टर्स एम्प्टी है उनकी आउट डिग्री 0 होगी, तो उनको कैलकुलेट करेंगे, उनको क्यू में रखेंगे और फिर उनकी एडजेसेंसी लिस्ट पे हम ट्रैवर्स करेंगे. तो ये ऑब्जर्वेशन है, और अभी भी एडजेसेंसी लिस्ट में क्या गड़बड़ है देख लो, मुझे नहीं मालूम. ओके, if you are really interested in DSA, then you have to figure it out, this small box. Okay, get them in a queue, try to reach to the other safe states, that is traverse back and reduce the out degree. If out degree is equivalent to 0 for any, means all the paths reaches to terminal node, because we start with the terminal and add them to queue and save state and continue. Okay, this is the main observations that you should do for graphs question initially. और धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हो जाएगी चीज़ें, और टाइम m इंटू एन होगा बिकॉज ऑफ, और m प्लस एन बोल दो, या m स्पेस होगी वो, सॉरी, m इंटू एन विल बी राइट टाइम, स्पेस होगी प्लस. ओके, बिकॉज देयर आर m नोड्स, सॉरी n नोड्स एंड m एजेस, तो n इंटू m. ओके, तो कोड देखते हैं अभी. So this is the simple code. How many number of nodes in the graph, and then out degree of n plus 1 nodes, because जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए, एंड एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है अपने. यहाँ पे एक 2D वेक्टर भी ले सकते हो आप, देयर इज नो इशू विद 2D वेक्टर, बट आई चूज टू गो विद एडजेसेंसी लिस्ट अरे और लिस्ट वेक्टर, और उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो गिग्स फॉर गीक्स पे, देख लो, या अदर पार्ट पे. क्यू, सो क्यू यूज किया हमने फॉर BFS, एंड रिजल्टेंट वेक्टर सेफ, जहाँ पे सेफ स्टेट्स रहेगी. ओके, तो सिंपली हम ग्राफ पे ट्रैवर्स करेंगे अभी, जितने नंबर ऑफ रोज है ग्राफ में उतने, और हर एक रो का जो वैल्यू है वो हमारा होगा एडजेसेंसी लिस्ट वेक्टर, और उस रो के इंडेक्स से हम वहाँ पे रीच कर सकते हैं. तो रो का इंडेक्स होगा हमारा आउट गोइंग इंडेक्स, मतलब यहाँ से हम यहाँ तक जा सकते हैं. ओके, फ्रॉम आई टू आई, और आई की इन डिग्री आउट डिग्री बढ़ जाएगी, सॉरी, क्योंकि आई से हम बाहर जा रहे हैं. if at any point of time if any row has out degree 0, मतलब जैसे 5 और 6 in first case, क्योंकि उनके वेक्टर्स एम्प्टी है 5 और 6 के. ओके, तो we will push them into queue और उनको अब नाउ we will get them one by one from the queue, और उनको सेव स्टेट में डाल देंगे. एंड उनसे अब कहाँ तक पहुँच सकते हैं, अभी यहाँ से देखेंगे आप, जब हम 2 पे जाएंगे तो अवर एडजेसेंसी ऑफ 5 की लिस्ट है, उसमें 2 रहेगा और 4 रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट इंडेक्सिंग जो हमने यहाँ पे की. तो हम वहाँ से 2 और 4 पे जाएंगे और उनकी आउट डिग्री एक एक से रिड्यूस करेंगे, और दोनों की आउट डिग्री 1 है तो इनिशियली 0 ही हो जाएगी, और वो भी क्यू में आ जाएंगे. फिर 2 से हम कहाँ तक जा सकते हैं वो देखेंगे. 2 से हम 0 तक भी जा सकते हैं, एंड 2 से 1 तक भी जा सकते हैं, और उनकी भी आउट डिग्री हम 0 करके देखेंगे, पर रिड्यूस करके देखेंगे, बट उनकी आउट डिग्री 0 नहीं होगी, बिकॉज 1 also goes to 3, and sorry, 1 yeah, 1 also goes to 3, and 0 also goes to 1. That's why उनकी इंटीग्री 0 नहीं होगी, वो क्यू में नहीं आएंगे, और वो सेफ स्टेट्स नहीं है हमारी इवेंचुअली, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ साइकिल. और आखिर में सॉर्ट कर देंगे जैसे बोला है हमें इन द लास्ट लाइन, the answer should be in ascending order, and at the end we will return. Okay,
तो इसकी टाइम होगी m into n, m edges and